review bench, as we said, is not in accordance with the settled principle. नहीं, पहले बात पूरी सुन लीजिए. पॉइंट नोट कर लिया. तो इस जिसने बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया है, they are exercising administrative power. Whether 75A or under Article 191A, they are exercising administrative power. When this matter has come to the knowledge of this honorable court, wasn't it proper that they should have been directed to reconstitute bench to include all those judges who were members of the previous? जो आर्टिकल 191A है उसमें तस्वर है बेंचेस का. देखिए आप उस पे जा रहे हैं कि क्या हम एडवाइस करते फलां करते. दैट इज नॉट. वी आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. जो भी बात है मैं कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हुए एक बात कर रहा हूँ. नहीं, आप कहते हैं कि जी एक जजमेंट नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा. एक केस में ये हुआ था और जुडिशल बेंचेस बनाने के इख्तियार जो है वो जुडिशल कमीशन के पास है. पहली बात इसमें ये कही गई. सो इसलिए एक बात क्लियर है कि एक से ज्यादा बेंचेस बन सकते हैं, विच कैन इंक्लूड ए स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑल्सो इन केस ऑफ रिव्यू, to let all those judges be part of the constitutional bench for that particular case where under the concept of review they should be included. So that is something which is possible within the meaning of Article 191A. ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ. लेकिन अगर ये नहीं बना है तो कोई चीज रोकती नहीं है इस ऑनरेबल बेंच को एक्सरसाइजिंग जुडिशियल पावर कि आप डायरेक्शन दें जुडिशियल कमीशन को. क्योंकि देखिए ना, एक और फोल्ड सेकेंडरी है. 191A का क्लॉज 1 प्राइमरी है जो कहती है कि एक से ज्यादा बेंचेस होंगे. और फिर मुझे दोबारा कहना पड़ेगा. अब मैं अच्छा नहीं लगता कि आपको रिमाइंड कराऊं कि व्हाट इज द concept of judicial proceedings and objections of the bench. वो फर्स्ट डे आप लेते हैं, आपने अपनी पिटीशन में लिया, वो डिसाइड हो गया. अब लास्ट डे ऑफ हियरिंग ऑफ रिस्पोंडेंट साइड कम अज कम आज फिर आप एज ए लास्ट काउंसिल, दो काउंसिल जिन्होंने किया उन्होंने कहा जी कि एज इट इज डिसाइडेड नाउ वी प्रोसीड विद दिस बेंच. उन्होंने अपने फुल आर्गूमेंट्स किए, दूसरे काउंसिल ने भी किए, आपने भी मेरिट्स पर स्टार्ट किए. फिर आप आखिर में फिर आ जाते हैं उन्हीं बातों पर. 10 मिनट्स आपको कहे थे इफ यू वांट टू प्रोसीड ओके, वरना फिर I want very much like to proceed. एक बात मैं अर्ज करूं, मैंने इतराज नहीं किया था, किसी पर भी इतराज नहीं किया, लेकिन एक वर्ष किया करूं. लेकिन देखिए ये रिक्यूजल जो होता है, अब आप कहते हैं जी आप फलां को भेज दें, फलां को भेज दें. जब मेरिट्स पर एक दफा हियरिंग हो जाए, आप जानते हैं कि फिर दी जुरिस्डिक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे इतराज नहीं हो सकता. देखिए जब तक फैसला आप नहीं करते जुरिस्डिक्शन फैसला हो चुका. खान साहब फैसला हो चुका. आपका एतराज हमने सुन लिया, आपका एतराज हमने टर्न डाउन कर दिया. अब रिव्यू पे कुछ कहना चाहते हैं तो बार बार हम आपके पास 10 मिनट है, वो भी हम आउट ऑफ कर्टसी आपको दे रहे हैं, अदरवाइज यू आर नॉट एंटाइटल्ड. क्लियरली आई एम सेइंग. चलिए मैंने ये दिन भी देखना था. बिल्कुल देख तो चाहिए. वो कहते हैं आई मूव करता. सुन ले खान साहब, जरा थोड़ा सा लाइट कर देते हैं. लाइट साइड में देखिए. मैंने कहा मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है. खुद करदारा इलाज नियस, यानी अपने किए का कोई इलाज नहीं होता. दिस इज ऑन अकाउंट ऑफ योर. तो मसला है पिछले 75 साल से. खान साहब हम आते हैं. खान साहब प्लीज आप भी सुन लें. हमने आप ही से सीखा है और आपके शागिर्द आपके साथ जेलों में भी गए, या मेरे दाएं बाएं से लोग हैं जो इस इंस्टीट्यूशन के लिए जेलों में गए. जो कुछ आपने कल किया, काजी मेरे नजदीक इस वक्त सबसे अच्छी हस्ती है. वो मेरा मेंटोर भी है, वो मेरा उस्ताद भी है. कल आपने उसके एब्सेंस में, आप ये एक बात हम इज्जत के लिए आते हैं, अगर बाहर में निकलूं दुनिया के किसी शख्स को इजाजत नहीं हो कि वो मैं या मेरे मेंटोर के बारे में उसको गले से पकड़. कल आपने सिटिंग जजेस के बारे में, जो जिस जजमेंट पे जो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजेक्शन है, जो डिसाइड हो चुका था, जिसका रिव्यू भी डिसाइड हो चुका था, आप सिटिंग जजेस के बारे में जो कुछ आपने कहा, हम आपको बहुत इज्जत करते हैं. शायद जिंदगी में सबसे ज्यादा जब्त किए. ये क्या मैं 6 बार छोड़ चुका हूं, आपको पता है, हम आपके शागिर्द रहे. ये कोई हमारे लिए इसका कोई हैसियत नहीं. अगर इधर इज्जत नहीं हो, दुनिया का जो भी जाब है, मैं कम अज कम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ में लानत भेजता हूँ, 1 मिनट के लिए भी नहीं करूंगा. मगर ये वाला तरीका आपसे, खुसूसन आपसे तो दुनिया देख रही है. और ये मुसीबत ये, कल आपने इसको डी चौक बनाया, कल आपका एक भी लीगल
دے رہے, آپ تیز کرتے رہے, آپ لوگوں کا کریکٹر اسیسینیشن کرتے. کس نے یہ رائٹ آپ کو دیا ہے؟ دیکھیے میں نے پچھلے نہیں, پلیز ایکسرسائز آف ایپلیٹ جورسڈکشن. میں کیوں کہتا ہوں کہ وہی جج ریویو بینچ میں ہونے چاہیے جنہوں نے پہلے سنا ہوتا ہے, کیونکہ جو دوسرے جب سنتے ہیں تو وہ ریویو کا کانسیپٹ نہیں. خان صاحب, آپ سے ابھی بینچ نے اپنا مائنڈ ایکسپریس کر دیا ہے کہ آپ ریویو کے سکوپ کے اوپر اپنے آپ کو آرگومنٹ کیجئے. آپ نے پہلے دن آبجیکشن کی, سینئر ممبر صاحب آپ سے کہہ رہے ہیں, سینئر ججز آپ سے کہہ رہے ہیں, ممبر آف دا بینچ کہہ رہے ہیں, پلیز آپ اپنے آپ کو کنفائن کیجئے ٹو دی آرگومنٹس آن دا اسکوپ آف ریویو, پلیز. وہی کر رہا ہوں. تو پھر آپ اس کو بات کانسٹیٹیوشن آف بینچ کے اوپر اور سارے اس کمپوزیشن پہ نہ جائیے پلیز. آپ ہم آپ کو کیسے سمجھائیں؟ دیکھیے بات سنیں, میں یہاں کیا بحث اپنی دلیل دے رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہی ججز سنتے ہیں ریویو میں جو کہ اوریجنل سنتے ہیں, اس لیے کہ ادروائز جب دوسرے ریویو جورسڈکشن ایپلیٹ جورسڈکشن نہیں ہوتی. اس کو نوٹ کر لیجیے 2025 SCMR 257. 2025 SCMR 257 at page 263. میں نہیں پڑھتا کیونکہ آپ بہت جلدی میں, ورنہ تو یہ بس پلیز فالتو بات بالکل نہ کریں, ٹو دی پوائنٹ رہیے. اچھا جی, نیکسٹ. دیکھیے یہ اگر وی ایکسپٹ the different bench can review the jurisdiction, just decision or judgment of another bench which had different formation. That would virtually give the government authority, which has 6 members in JCP, in Judicial Commission of Pakistan, to get any judgment reviewed which they don't like by getting another bench appointed form which would not include their original judges. یہ خطرہ ہے. میں آپ کی جو جس طرف, کیونکہ کیسز کی پولیٹیکل, کانسٹیٹیوشنل کیسز کی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوتی ہیں, ایسے کیسز میں اگر آپ ریویو بینچ باہر سے بیٹھ کے گورنمنٹ بنائے گی تو جو بھی اس کو کیس کا فیصلہ ناپسند ہوگا اس کے لیے ڈفرینٹ بینچ بنا کے. نوٹڈ ہو گیا, آپ کا کرک سمجھ آ گیا. اگلے پوائنٹ پہ جائیے. اچھا, دوسری نیکسٹ بات دیکھیے, نظر ثانی. ہم ریویو کس کو کہتے ہیں؟ نظر ثانی. بالکل ٹھیک ہے نا, ورڈ نظر ثانی ہے. نظر ثانی وہی کر سکتے ہیں جس نے نظر اول کی ہو اس کے. پھر وہی بات ہوگی, نوٹڈ. آگے بڑھیے نا, اور نیا پوائنٹ دے دیجیے. آپ کہہ رہے ہیں حیت ٹھیک نہیں ہے بینچ کی, وی نوٹڈ, اور حیت ٹھیک نہ ہونے کی ریزن آپ دے رہے ہیں, اس کی کانسیکوینسز بھی دے رہے ہیں. ریزن کیا ہے؟ میں نوٹ کر لیا, میں ریزنز دے رہا ہوں. نوٹ کر لیا.